सो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए एंड आप सब ने अपनी टीम्स को इनवाइट कर लिया होगा आज की मीटिंग के लिए। डॉक्टर कैरन इज ऑलरेडी विद अस ऑन द कॉल एंड वी हैव ऑलरेडी हर्ड हर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स नाउ एंड वी नो हर ऑफ कोर्स एंड हर ट्रेनिंग इज एब्सोल्यूट अमेजिंग। सो आई होप आप सब जल्दी जल्दी अपने नोट्स नोट पैड लेकर के अपने अपने पेन्स लेकर के अपने टीम्स के साथ बैठे होंगे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। So, on today's call, again, we have Dr. Karen. Dr. Karen, now it's your turn to start your screen sharing and let's get into the session. As due to some technical error, we are already a bit late, and that's okay, no problem. We can try to cover up. So, yeah, please, All right. you can share your screen and then we can go ahead with the session. All right. Thank you so much. And First, hello. how are Eh, you? How are you doing? Good, good. Happy December. Can you believe it's December and it's such a wonderful time of year and holiday time? So it's lovely to be with you. This is our last session for the year, I'm sure. Yes, So, yes, I've already got some ideas for 2026. So, that's amazing. uh, We are looking forward to yeah. meet you again. So, this is a very important topic because having a sustainable business really is about retention. And I think, as I have said before, coming this January will be 21 years for me in USANA. Wow. And I have some team members who started with me 21 years ago. So I guess when it comes to retention, I have some things to share. I always say that I will share personally what's worked for me. Doesn't mean that's for everybody, but I'm sure you'll get some ideas and some ways you can implement this into your own business. And I call this the entrepreneur advantage because I really do believe retention is the key. एब्सोल्युटली। सो डॉक्टर कैरन बता रही हैं कि उन्हें जनवरी में नेक्स्ट ईयर युसाना में काम करते 21 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे और उनके साथ अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछले 21 साल से उनके साथ हैं। सो वो इस रिटेंशन टॉपिक को अपना द एंटरप्रेन्योर एडवांटेज नाम देती है, जो रिटेंशन है जिसके कारण आज भी उनके टीम में बहुत सारे लोग हैं जो सस्टेन्ड है ऑलरेडी और जो उनके साथ ग्रो कर रहे हैं। सो डॉक्टर कैरन आज अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी कि उनके लिए क्या वर्क किया। हो सकता है वो हमारे लिए काम ना करे बट उनमें से हमें कुछ आइडियाज जरूर मिल जाएंगे जो इन फ्यूचर हमारे बिजनेस को स्टेबली ग्रो करने में सक्सीड करने में जरूर हेल्प करेंगे। यस। Lovely. And this is part of my team at convention in Salt Lake City. I look at this group here, and I have all age groups. And this is Edna Northrup, who at this time was 94 years old, came to convention. Can you believe? वाओ। And uh, you'll see that part of the key to retention is community, 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 community. And it's so important. So I just love my team, and big part of the reason I do what I do is the teamwork. एब्सोल्युटली। एंड डॉक्टर कैरन, व्हेन वाज दिस कन्वेंशन, द वन यू आर टॉकिंग अबाउट? This was about 5 years ago. ओह Not वंडरफुल। this last one, but about 5 years ago. ओके ओके। सो आई ट्रांसलेट दैट। सो 5 साल पहले एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें डॉक्टर कैरन अपनी टीम के साथ गई थी और ये उनकी टीम का फोटो है, ग्रुप फोटो जो वो दिखा रही हैं और वो बता रही हैं कि इनके ग्रुप में आप नोटिस करेंगे कि हर एज ग्रुप से लोग हैं। इनफैक्ट एक पर्सन के बारे में डॉक्टर कैरन ने बताया कि वो 94 ईयर ओल्ड हैं और वो इस कन्वेंशन का पार्ट है एंड ये बहुत अमेजिंग बात है डेफिनेटली। सो एक चीज पे वो सबसे ज्यादा इम्फेसिस कर रही है, दैट इज कम्युनिटी। ठीक है, वो कम्युनिटी की बात कर रही है, कम्युनिटी कम्युनिटी कम्युनिटी, जिसके ऊपर जो हमें भी बिल्ड करनी है हमारी टीम के साथ ताकि हम हर किसी को साथ लेके हमारी टीम को उस तरीके से फ्लरिश कर सके, नरिश कर सके। या। Thank you. Okay, so I always like to tell you what we're going to do in our time together today. And first of all, we're going to talk about retention as a new recruitment and a three-step retention success formula, because I always like to give you action steps, a duplication formula, very simple, and some retention habits of high-performing leaders, and then some retention metrics I think is good for you to measure in your business.
एब्सोल्युटली। सो आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम रिटेंशन के बात करेंगे, रिटेंशन कैसे नया रिक्रूटमेंट का तरीका है वो। दूसरा, 3 स्टेप रिटेंशन सक्सेस फॉर्मूला। इसके अलावा हम डुप्लीकेशन फॉर्मूला की बात करेंगे। एंड इसके साथ साथ हम कुछ रिटेंशन हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो हाई परफॉर्मिंग लीडर्स परफॉर्म करते हैं। एंड एट लास्ट हम 3 रिटेंशन के मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं आपके रिटेंशन टीम के अंदर। सो आज का टॉपिक ये रहेगा। अभी भी अगर आपने अपनी टीम को नहीं ज्वाइन कराया तो आप जल्दी से उन्हें ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ताकि वो भी ज्वाइन कर ले। या आई वाज जस्ट requesting them to join their team. You can send the screenshot to them and ask them to join this very important session. Oh, that's a good idea. Okay, okay. I know it's late Yeah. over there, so you would Yeah. encourage people to come on. It's worth their time. Yes. Yeah. Okay, so this is why I think retention is the new recruitment because we always talk about recruitment and new brand partners. And yes, that grows your team, but retention stabilizes your team. So for me, 21 years with USANA, what I do in with my retention habits really keeps my business stable. Absolutely, and that's actually very amazing. That's one of the very finest thing, the finest success of business that you have shared. That recruitment, हम recruitment की बात करते हैं, हम हमेशा recruitment की बात करते हैं, नए लोगों को business में लेकर आने की बात करते हैं। तो recruitment आपकी टीम को grow करता है, लेकिन retention आपकी टीम को stabilize करता है। That's very amazing. That's actually a success mantra to sustainably grow in the business. So Mm. यही And we चीज है। don't talk about it very much, do we? We don't talk about that very much Yes, because absolutely. recruitment, we can bring new people in, but they, as everyone knows, not everyone stays. So what you do to support people to stay is so key. We've got to teach that as a separate skill. यस, करेक्ट। सो Mhm. डॉक्टर कैरन बता रही है कि जब हम रिटेंशन की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं। और जो लोग हमारे साथ नहीं रहते, कुछ बीच में कुछ लोग होते हैं जो चले जाते हैं और कुछ जो रहते हैं हमारे साथ। तो आप कैसे उन लोगों को स्टे कराते हो उसे हम बोलेंगे रिटेंशन। और रिटेंशन आपकी टीम को स्टेबलाइज करने में आपकी मदद करेगा। सो ये अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इसके ऊपर डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। Beautiful, beautiful. Okay, so let's look at this, what I call, and these are all concepts I've kind of put together for you so that I can simplify it. The three-step retention success formula. That's what I call it. That's Dr. Karen's version. So first of all is to strengthen the 4 pillars of belief. And you would have heard uh, on this previous video that mentioned the 4 pillars of belief. And this is something that you keep reinforcing with your team. Then I'm going to talk about community connection because that's what keeps people engaged. People want to belong to something. They want to feel like they belong and it's meaningful. And then the purpose and path forward. So that's my 3 steps that I'm going to review with you. एब्सोल्युटली। सो आज अभी जो सेकंड टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे दैट इज 3 स्टेप फॉर्मूला, रिटेंशन फॉर्मूला। जिसमें हम सबसे पहले स्टेप 1 जिसमें है 4 पिलर्स ऑफ बिलीफ, जिन्हें हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरा, कम्युनिटी कनेक्शन, जहाँ पे हम लोगों को ये एहसास दिलाए कि वो कहीं बिलोंग करते हैं, वो एक मीनिंगफुल कनेक्शन उनके साथ बिल्ड करें हम। तीसरा है पर्पस और पाथ, ये दोनों को हम कंबाइन करें। सो इसके बारे में ऑब्वियसली डॉक्टर कैरन आगे बात करेंगी। ठीक है। Yeah, we can move Yeah. forward. Okay. So here's the 4 pillars of belief. You've heard them before. You heard David Mullen talk. That video that you saw before I started really has all the elements that I'm talking about. He mentioned products, and you've got to have trust. So the first pillar of belief is products. The second one is the network marketing industry as a whole. And I will tell you personally, this was the hardest one for me to move from what I was doing to be part of the network marketing industry. So I'm suggesting that we do a whole separate webinar on that because that's really important to edify the industry we belong to. And then belief in yourself and belief in USANA as a company. These are the 4 pillars that you keep reinforcing with your team.
यस एब्सोल्युटली। सो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये वाला पॉइंट क्लियर करती हूँ। जब हम अपने घर की नींव रखते हैं या जब आप अपनी घर बना रहे होते हैं, तो आप देखेंगे आपकी छत कभी भी पिलर्स के बेसिस पे ही खड़ी होती है। वो चार पिलर्स ही होते हैं जो आपकी छत को पकड़ के रखते हैं, राइट। सो यहाँ पे उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये फोर पिलर्स ऑफ बिलीफ की जो बात करी है डॉक्टर कैरन, आपकी टीम को पकड़ के रखने के लिए ये चार पिलर ऑफ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बिलीफ किस चीज पे होना चाहिए? वो बिलीफ होना चाहिए आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर। आप जो प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं उसके ऊपर आपको भी बिलीफ होना चाहिए और आपकी टीम को आपको बिलीफ दिलाना है। वो ट्रस्ट, वो फेथ उनके पास होना चाहिए प्रोडक्ट्स को लेकर के। एट द सेम टाइम हम जिस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, ऑल द मार्केट में डेफिनेटली आपको बहुत नेगेटिविटी मिलेगी इस चीज को लेके, बट स्टिल एट द सेम टाइम अगर आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स यू एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, राइट। सो ये आपको बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। सो उसके ऊपर बिलीफ सिस्टम, बिलीफ होना चाहिए। तीसरा, अपने खुद के ऊपर आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ग्रो करेंगे, और आपको अपनी टीम को भी ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि वो भी ग्रो करेंगे। एंड एट लास्ट, युसाना के ऊपर एज अ कंपनी आपके आपको भी बिलीफ होना चाहिए और आपको अपनी टीम को वो बिलीफ दिलाना है युसाना के ऊपर एज अ कंपनी। Right. So, of course, we could spend hours talking about all of these. So I'm going to give you the key elements. To have a business that has good retention, people have to stay on the products because that's the key to this business is having people order every single month. So the first pillar with product confidence is you've got to educate customers early. As soon as someone orders, I ask them to call me when the order arrives, and we go through a box opening, and explain how to use them, so that I make sure they use them as soon as they arrive, how to use your products, and you want them to have quick wins. And I suggest tracking results. So before and after photos, if it's a program for weight management, and I have a questionnaire that I use that I'm going to share with you of how I help people track results. And then have a 30-day plan set with their products. Don't just have them start using the products. Get them to think about a 30-day window, because that's how you're going to get them really feeling like they get the benefits from the products. एब्सोल्युटली। सो पिलर नंबर वन है प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस। आपको अपने टीममेट्स को, आपके ब्रांड पार्टनर्स को और आपके कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस दिलाना है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप उन्हें एजुकेट कर सकते हैं, कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे डॉक्टर कैरन करती है, वो अपने कस्टमर्स को ये बोलती है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हो, जैसे ही आपका प्रोडक्ट अराइव करता है आप मुझे इमीडिएटली कॉल करो। सो वो एक कॉल पे आती है इमिडिएटली, और वो बॉक्स ओपनिंग, वीडियो कॉल पे आती है और उनके साथ बॉक्स ओपनिंग करती है, जिससे एक एक्साइटमेंट भी आती है। और वो उन्हें एजुकेट करती है उन प्रोडक्ट्स के बारे में, एट द सेम टाइम वो उन्हें यूज कैसे करना है वो बताती है। सेकंड है कि वो रिजल्ट्स ट्रैक करने के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन देती है। अगर हमने वेट मैनेजमेंट का कॉम्बो लिया है तो आप बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स ले सकते हैं उनसे, ठीक है, और उन्हें बता सकते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं जो वो एक्सपीरियंस करेंगे डेफिनेटली। एंड थर्ड, आप एक 30-डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना के दे सकते हैं अपनी टीम को, जिसे वो आगे डुप्लीकेट कर सकते हैं। सो इससे होगा ये कि वो उन्हें पता है कि वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। जब आप उन्हें 30 डेज का एक प्लान देते हैं तो उनके माइंड में वो बैठ जाता है कि मुझे 30 डेज इस चीज को फॉलो करना है। तो दे आर मोर लाइकली टू कंज्यूम द प्रोडक्ट्स इन रेगुलर बेसिस। Exactly, which is what retention is all about. So एब्सोल्युटली। this is something I'm going to share with you. It is called you'll see at the top, a medical symptom questionnaire, MSQ, and you can get this anywhere. You can find it. It's used very frequently. Now, we are not treating medical conditions here. We are just asking people how they feel in their body related to you'll see every system of the body, because remember, these cellular nutrition products are affecting cells in the body, which can affect all over the body. So I just use this questionnaire. I have them fill it out before they start the products. This is part of the 30-day transformation plan. They just say if they have any of these symptoms, and they rate it from 0 to 4, from never to frequently.
and they total it up, and then they give me a grand total. They add up all these numbers and they give me a grand total. And then I get them to repeat it at the end of 30 days of using the products so that we can see with numbers how differently their body has shifted. This is getting them realizing the benefits of the products. We're working on retention from the beginning. एब्सोल्युटली। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो डॉक्टर कैरन अभी हमारे साथ शेयर कर रही है। ये क्वेश्चनर है जो वो बता रहे हैं कि वो अपनी कस्टमर्स के साथ शेयर करती हैं जब भी वो उनके साथ कंसल्टेशन स्टार्ट करती है उससे पहले। सो ये मेडिकल कंडीशंस का क्वेश्चनर है ऑल दो, बट इससे आपको आइडिया लग सकता है कि आप अपने कस्टमर को क्या प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है तो वो उनके मेडिकल कंडीशन को ट्रीट नहीं करेंगे, बट वो सेलुलर लेवल पे काम करेंगे, तो हो सकता है ये जो सिम्टम्स यहाँ पे मेंशन्ड है वो रिड्यूस हो जाए। सो आप भी ये क्वेश्चनर को अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। आज जब आप उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं उसके पहले उनसे आप ये सारे कंडीशंस में उनको जो जो महसूस होता है उस पे आप टोटल नंबर ले लीजिए और उसके बाद उसका सम टोटल ले करके आप उनको कंसल्ट करिए प्रोडक्ट्स के बारे में, जो भी उन्हें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं आप उन्हें शेयर करिए। एंड आफ्टर 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, 30 डेज जब वो अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर लेंगे उसके बाद आप उन्हें दोबारा से ये क्वेश्चनर फिल करने को बोले, और तब आपको एक विजिबल बिफोर आफ्टर का डिफरेंशिएशन उनको भी दिखेगा और आपको भी जरूर दिखेगा। Lovely. And I will just reinforce, we are not treating medical conditions. We या are just आई ऑलरेडी asking सेड। about how they're feeling in their body, not making any promises that we're going to change any of this. It's simply a observational exercise. And that's really important because we, एब्सोल्युटली। तो we हम have to be किसी भी compliant. मेडिकल कंडीशन को हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन है हम उन्हें शेयर कर रहे हैं ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए है, ताकि हमें उनके सिम्टम्स का आइडिया लग सके। दिस इज सिंपली फॉर ऑब्जर्वेशन, ये किसी भी मेडिकल गाइडेंस के रिगार्डिंग नहीं है, और हम डॉक्टर्स नहीं है तो हम किसी भी तरीके का मेडिकल कंसल्टेशन उन्हें नहीं प्रोवाइड कर सकते। And I see we have in the chat, I think Nermit said, this is very brief. And yes, that's why I love it. It's one little page. It's very brief, but it's been very profound in terms of helping people see the benefits of our products because that's what we have to do. And so the other thing, of course, about our products, how do people, well, why should I take USANA and not all the other things that are on the market? So purity is, of course, the key to why USANA stands above the rest. And there is do you want me to pause there or do I go to the next one? या आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट दिस फर्स्ट। All right. डॉक्टर कैरन ने एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन भी पूछा है हमसे कि लोग आपसे भी पूछते होंगे कि हम ये सारा का ही प्रोडक्ट क्यों कंज्यूम करें जबकि मार्केट में हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। सो प्योरिटी इज द आंसर। प्योरिटी एक आंसर है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स प्योर हैं और वो डेफिनेटली रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो रिजल्ट देंगे आपको क्योंकि आवर प्रोडक्ट्स आर प्योर, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। या वी कैन मूव फॉरवर्ड। Okay. So here is, I don't know if, have you seen this book, Anshul? Do you know this book? Comparative Guide to Nutritional Supplements. Uh, आई डोंट this, थिंक सो। okay. So this was at convention, global convention this year in Salt Lake. So this is globally, people are using this book because I know this book says for the Americas. This is my copy because I never go anywhere without this book. Oh, I got so much sunshine. You see all the beautiful sunshine coming in my window here? या Oh my gosh, it's beaming in, it's beaming in. Um, it says the Americas, but this compares supplement brands, uh, about 100, 1,500, 1,500 supplement brands that some of which are in India right now. And even though it may not be in India, it's demonstrating why USANA is the superior company. Because you look up, it's very simple, and it's on Amazon, so you can get this book. It's got a little chart. You have all the company names, and it rates them on a star rating from 0 to 5, 5 being a 5 star. And USANA rates the highest ranking supplement in this comparative guide. So this is a very good book to have, again,
to edify why USANA is the superior company to choose, even though it is just for the Americas. It's your company, USANA, that was founded in America but is now global. Yes, absolutely. So, Dr. Karen, now that you told me about the ratings, I can remember, I can recall one of our Oh, brand partner from our team. I was just interacting with them, and he told me about this book, and he actually okay. told me about the ratings mentioned over here. Yes, so I Yes. can recall this that I knew about this book, of course. So, I would like to translate what you mentioned. सो ये एक बुक है जिसके बारे में डॉक्टर कैरन बता रही है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स फॉर द अमेरिकास। ये अमेरिका के लिए डेडिकेटेड है बेसिकली बुक। बट इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो कि ग्लोबली ऑपरेट कर रही हैं, जैसे यूसाना है, और भी कुछ कंपनीज जो इंडिया में हैं ऑपरेट कर रही है, जो कि ग्लोबली काम कर रही है अगेन। सो इस बुक में एक बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उन सारी कंपनीज के नाम मेंशन्ड है और उन्हें रेटिंग्स दी गई है उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और उन ऑन देयर प्रोडक्ट्स क्वालिटी बेसिकली, राइट? Quality. Yes. And my next slide, I'm going to explain how you explain the quality. Mhm. ओके, यस। तो उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बेसिस पे, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आई गेस उन्हें रेटिंग दी गई होगी। अगली स्लाइड में डॉक्टर कैरन इसके बारे में और अच्छे से बताने वाली है, बट आप ज़रूर से इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप भी ज़रूर से इसे सर्च कर लीजिए। अगर हमारे पास ये अवेलेबल हुई तो आप इसे अपने पास मंगा करके अपनी टीम को ये शेयर कर सकते हैं, या आई फाइंड पीडीएफ। अगर मुझे कोई पीडीएफ मिलेगा इस बुक का तो मैं डेफिनेटली ग्रुप में सर्कुलेट करूंगी। बट ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है जब भी हम लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारे ब्रांड के बारे में बता रहे हैं। ये बुक आपके लिए क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकती है आपके कस्टमर्स के सामने। या वी कैन मूव Okay. फॉरवर्ड। So, what I do when I'm in front of someone is I'll say, "What are you currently taking?" And I know there's a lot of these brands are in India. Um, I won't mention names, I suppose, on the webinar, but I ask someone what they're on, and then I can tell what star rating, whether they're 0 to 5 star. USANA is a 5 star platinum rated in this book. It's the highest ranking. And this was not done, prepared by a supplement company, by the way. The Canadian government commissioned this study. That's really important. Yeah. वाह। Yeah. ओके। तो ये किसी भी न्यूट्रिशन कंपनी की बनाई हुई नहीं है बुक। ये कैनेडियन कैनेडियन गवर्नमेंट यू मेंशन्ड। Yes. 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 तो कनेडियन गवर्नमेंट के शायद कोई ऑफिशियल है जिन्होंने ये बुक बनाई है, और उसमें उन्होंने सारी कंपनीज को रेट किया है। तो जब भी आप किसी के पास जा रहे हैं, अगर आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप कोई करंट प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर वो कोई स्पेसिफिक ब्रांड का नाम लेते हैं तो आप इस बुक में चेक करके उन्हें बता सकते हैं कि क्या स्टार रेटिंग है उनके प्रोडक्ट्स को। और योसाना को 5 स्टार रेटिंग दी गई है ऑलरेडी इस बुक के अंदर। ठीक है। सो अगेन इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड, तो ये बहुत अपने आप में बहुत अमेजिंग बात है, और इससे डेफिनेटली हमारे ब्रांड की, हमारे प्रोडक्ट्स की क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। जी। Yes. So this is how I explain this very simply. I call it the CAPS, CAPPS. So what this book is studying in across all companies is completeness of the product, the completeness of the whole multivitamin and antioxidants. If it's absorbed, the absorbability into the body, does it actually get absorbed into the body? The potency, the purity, and the safety, because a lot of products are not safe to take. A lot of over-the-counter products have fillers that can create more damage in the body. So this is a simple way that I communicate something, very complex of how we're rating the different products. यस, आई इंसिस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक द स्क्रीनशॉट। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। ये बहुत इजी और बहुत अच्छा तरीका है लोगों को समझाने का कि क्यों यूसाना के प्रोडक्ट्स। सो जब भी कोई आपसे पूछता है वाई यूसाना, तो आप उन्हें ये कैप्स मेथड समझा सकते हैं। कैप्स में सबसे पहला सी होता है कंप्लीटनेस का। कंप्लीटनेस एज इन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप में कंप्लीट हैं, वो कंप्लीटली बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहे हैं, अब्जॉर्बेबिलिटी। उसके बाद वो पोटेंट है, प्योर हैं। अगेन हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे जो बनाने का मेथड है, दैट इज एब्सोल्युटली सेफ टू यूज। ठीक है। सो ये बहुत अमेजिंग तरीका है लोगों को समझाने का कि वाई योसाना प्रोडक्ट्स, बिकॉज आर प्रोडक्ट्स आर कंप्लीट, दे अब्जॉर्ब, वो आप कंप्लीट है, वो आपके बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, पोटेंट है, प्योर है, और सेफ्टी मेजर्स के साथ बनाए गए हैं। इसमें कोई फिलर्स या ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी बॉडी को किसी भी तरीके से नुकसान कर सकती है। Don't you like very simple way to explain it?
Actually, Yeah, it is very yes, simple way to very explain it. simple. Okay, so as you can see, I've spent a lot of time in the retention model, success model, talking about the products, because if people do not stay on the products, you do not have a sustainable business. So and I mean, there's so much more I could talk about, but this is a beginning, like getting the book, explaining the reason why USANA stands amongst the rest, having a little questionnaire. These are things you could do straight away. So now I'm going to the second pillar, which is the network marketing industry, which I'm suggesting we have a whole other webinar on this because this is often the part that people have the most struggle with. And I personally did when I first started. So I have a whole presentation on the benefits of this industry to edify it. And but today I'm just going to give you a little snippet of that. Little Absolutely snippet. works. Yes. So to summarize, the फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पिलर जो कैप्स मेथड जो डॉक्टर कैरन ने बताया, सो उन्होंने जब कैप्स के बारे में बताया तो उन्होंने ये भी बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करना कि रिटेंशन तब होगी जब हम प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे या हमारे कस्टमर प्रोडक्ट्स को सस्टेनेबली कंज्यूम करेंगे। सो सबसे पहला तरीका रिटेंशन का तो यही है कि हम अपने कस्टमर्स को, हम अपने आप को, हमारी टीम को प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट करें, उनको एक फेथ आए, उनको कॉन्फिडेंस आए और वो रेगुलरली कंज्यूम करें प्रोडक्ट्स को। ठीक है। एंड अब सेकंड पॉइंट, सेकंड पिलर के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज कैश फ्लो क्वाड्रेंट एंड अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डॉक्टर कैरन बता रहे हैं कि उन्होंने भी स्ट्रगल किया था जब उन्होंने स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री के साथ काम करना। उसी के बेसिस पे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और अगेन इसके ऊपर हम जरूर एक अच्छी ट्रेनिंग डॉक्टर कैरन हमारे साथ लेंगे जरूर से। बट आज हम ब्रीफ में इसके बारे में बात करेंगे। या So today, just what I'm suggesting is this book made a big difference for me. It's called Rich Dad Poor Dad. It's been around for 25 years, long time. And it starts to get your mind shifted around finances. And one of the reasons this industry is so powerful now is this gig economy. Like people have different jobs. They're not staying in one job for a long extended time. And the network marketing industry is part of this gig economy. People want flexible income streams and consumers are demanding natural wellness solutions. So USANA fits into this concept of a new network marketing industry model in the wellness space. एब्सोल्युटली। डॉक्टर कैरन इस बुक के बारे में बता रही हैं जिन्होंने उसका जिन्होंने जो कि एक्चुअली माइंड शिफ्ट करने में हेल्प करेगी हमारा भी, दैट इज रिच डैड पुअर डैड। जिसमें आपको पता चलेगा कि गिग इकोनॉमी का राइज हो रहा है। दूसरा, फ्लेक्सिबल इनकम स्ट्रीम्स जो लोगों को चाहिए उसके बारे में बात की गई है। और उसके बाद ज्यादा कंज्यूमर्स हैं जो कि वेलनेस, नेचुरल वेलनेस सोल्यूशंस की डिमांड कर रहे हैं। इन तीनों चीजों के बारे में इस बुक के बारे में बताया और ये बुक छपी है 25 साल पहले। ठीक है। हमें ये बुक बहुत अच्छा आइडिया दे सकती है इन चीजों के बारे में। और सबसे अच्छी बात ये कि युसाना एज अ कंपनी इन तीनों कैटेगरीज में फिट करती है ऑलरेडी। वी हैव अ सोल्यूशन, हमारे पास ऑलरेडी एक सोल्यूशन है, वी हैव युसाना विद अस। या Yes. And so when you are talking to someone about, say, joining your team, I love this image. This would be another good screenshot to take. So when I'm talking to someone, this is from Rich Dad Poor Dad. It's called the cash flow quadrant. And it kind of explains the different ways of working or earning an income. And most of your financial success comes on the right side, over this side. But a lot of people, they have a job, so they're an employee. This is often where we start out in our career. You have a job and you get paid, but you really have no freedom in that job. You've got to do what they say. And then they say, oh, I want my own job. So they become, say, a massage therapist or a personal trainer. They're self-employed, but then they own a job. And if they don't work, they don't show up, they don't get paid. So this is where most people hang out. 90% of people are on this side. And
there is not financial success here. What Usana offers is you take you over to what we call a business owner. So having a system that works for you. And that's where we come into the duplication side of it, a system. And that system works for you even when you might be sleeping because you've created that system, you've created that retention strategy. And then when you have enough money, of course, you can invest that money. But this is where USANA is positioned in this cash flow quadrant. People can join USANA and still have a job. They can, so you don't have to just finish your job and join USANA. They can join USANA, start the system, and then while the system starts working, maybe work less hours to eventually work in USANA full time. It's very flexible. एब्सोल्युटली यस। सो डॉक्टर कैरन कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बता रही हैं जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक से आता है। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बताया है कि हमारे जो करियर्स हैं वो बेसिकली चार कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, ESBI। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, जो कि हर इंसान हमारे अपने करियर की शुरुआत शायद यहाँ से ही करता है, एक जॉब से। ठीक है, आपके पास जॉब तो होती है जहाँ पे आपको इनकम तो आती है, बट आपके पास कोई फ्रीडम नहीं होता है, राइट। उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि मैं खुद का बॉस बनता हूँ या मैं खुद फ्रीडम चाहता हूँ और एट द सेम टाइम मैं खुद का कुछ काम करना चाहता हूँ और खुद का कुछ काम करना चाहती हूँ, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में आते हैं। लेट्स से आप एक पर्सनल ट्रेनर बन जाते हैं या आपका एक स्टोर होता है, ठीक है। बट वहां पे भी एक चैलेंज यही है आपके साथ फ्रीडम का कि अगर आप काम पे आते नहीं है तो आपको पैसे नहीं आएंगे, राइट। सो यू ओन अ जॉब बट यू डोंट हैव एन इनकम इफ यू डोंट शो अप। आप अगर आप नहीं आएंगे तो आपको कोई इनकम नहीं आएगी। एंड फिर तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कि आप एक बिजनेस ओनर बन जाएं और अपना एक सिस्टम बिल्ड करें जो आपके लिए भी काम कर सकता है। और योसाना इस कैटेगरी में फिट आता है। जब आप योसाना के साथ स्टार्ट करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपनी जॉब को क्विट करके योसाना शुरू करें। आप जॉब के साथ साथ भी योसाना के साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपकी अच्छी ग्रोथ हो जाए तो आप बाकी जगह दूसरी जगह कम काम करके योसाना में फुल टाइम अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप एक सिस्टम बना रहे हैं जो सिस्टम आपके लिए भी काम करेगा जब आप उस सिस्टम में काम करेंगे, और वो आपको फ्रीडम देगा और आप तब भी पैसे कमाएंगे जब आप सो रहे हैं। क्या? Yes. So as I said, this is I'm just touching the tip of the iceberg on the value of the network marketing industry. But let's do a whole other webinar on एब्सोल्युटली। on this. So important. Oh, and I've even got a suggested topic: powerful ways to edify the network marketing industry. That is it is so important to in our discussion and we're attracting brand partners is to help them see that the network marketing industry is the new way of building financial success. Absolutely, Dr. Karen. I will definitely plan this session in our January's session. Okay, good. Good, 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 good. Yeah. Okay, so pillar three is belief in yourself. And again, oh my gosh, we could talk about this for a long time because a lot of time we're our own worst enemy and we um, we feel at the beginning that we're just like what we don't know what to do. And so working on that mindset, and I know Michael Calais has helped you with that when he did his tour of India recently. He's fabulous talking about mindset. The mindset is that you own, this is a business. You have an ownership mindset that you and an individual can develop, becoming and being a leader in your own business and working every day on that, having some kind of reading material, listening to a podcast, developing that leadership mindset is so important. एब्सोल्युटली। सो नंबर 3 पिलर दैट इज आप अपने आप को बिल्ड करें, ट्रस्ट बिल्ड करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। यहाँ पे डॉक्टर कैरन ने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था, द एंटरप्रेन्योर एडवांटेज, जो कि एक तरीके से उनका फेवरेट टॉपिक है जिसके बारे में बात करें। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ओनरशिप लेना, सबसे पहले अपने माइंडसेट की ओनरशिप लेना। आप अपने माइंडसेट को कैसे फीड कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप कर रहे हैं, आप कैसे लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करें। आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप वीडियो सुन
सकते हैं आप। आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं जो कि आपके माइंडसेट को डेवलप करें। और माइंडसेट किस चीज़ को लेकर डेवलप करना है? अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को लेके, अपने बिजनेस को लेकर के, कि ये आपका बिजनेस है, आप ओन करते हैं इस बिजनेस को। युसाना इज नॉट जस्ट अ बिजनेस, इट्स योर बिजनेस। ये आपका बिजनेस है। आपको इस चीज की ओनरशिप लेनी चाहिए कि ये मेरा बिजनेस है और मुझे इसे अपने बिजनेस की तरह ही डेवलप करना है। And you can see behind me, I do love books. So this could be another webinar where we talk about some of my favorite mindset books, resources that you just continue to flood your mind with. So that we could do a whole webinar on that as Absolutely. well. So important, so Sure, important. will do. Okay, pillar four is the company. So we've got the products, we've got the network marketing industry, we've got a belief in ourselves, but of course, belief in the company. And I know you, I see the video, I see how passionate you all are about USANA. You get, and you're on this webinar late at night, so you get the power of USANA as a company and this man. So this all starts with this man. And we are so fortunate that this company was started by an amazing scientist that has a PhD in microbiology and immunology. That makes us different. That a lot of companies are started by marketing people, but by this scientist, internationally recognized for his work in human cell culture. So this is another picture that you might take. I think it's a great little snippet to be able to share with people that you're talking to. Absolutely. Cellular nutrition. यस, करेक्ट। सो पिलर नंबर 4 है, दैट इज कंपनी, योर कंपनी युसाना। तो आपको सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, और ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट हो। हमारी कंपनी की शुरुआत डॉक्टर मायरन वेंस ने की है, जो कि एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और इम्यूनोलॉजिस्ट है, एंड ही इज अ साइंटिस्ट। सबसे अच्छी बात तो यही है कि बाकी कंपनीज अगर हम देखते हैं तो वो अलग अलग मार्केटिंग एजेंट के थ्रू स्टार्ट की होती है, बट हमारी कंपनी की शुरुआत करने वाले पर्सन ही रिनाउंड साइंटिस्ट है। डॉक्टर मायरन वैंस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है क्योंकि उनका काम है ह्यूमन सेल कल्चर टेक्नोलॉजी में और इन्फेक्शियस डिसीजेस डायग्नोसिस को स्टडी करने में। वो जाने माने पर्सनालिटी हैं, एंड अगेन ही इज़ अ प्रोफेशनल, ही इज़ एन एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट है और उनको एक्सपर्टीज है सेल कल्चर की, सेलुलर न्यूट्रिशन की, जिसके बारे में हम बात करते हैं। एंड यही रीज़न है, आई गेस, हमें अपने ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, बिकॉज हमारी कंपनी फाउंड ही एक ऐसे पर्सनालिटी के ऊपर की गई है जिन्हें एक्सपर्टीज है, जिन्हें नॉलेज है, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या डेवलप किया है। क्या? And I'm sure you've all been you talk about this, but I saw this slide recently and I love the visual that, again, when you're talking to people from about the Dr. Wentz story, this sometimes pictures speak a thousand words. So here he is in 1974, founded Gull Laboratories. And then he moved into creating the Epstein-Barr viral kit assay, which is now used worldwide in hospitals. So he was still working in microbiology then. And then he had an accidental discovery where he found his mom and dad became ill, and he looked at supplements on the market and they were so poorly formulated that that's where he decided, with all his cellular background, to create USANA in 1992 for optimal cellular nutrition products. So this is clearly a visual of why USANA was founded, from a reactive focus of testing in the lab to a proactive focus of wanting these nutritional products to be better than anything on the market. एब्सोल्युटली। सो ये पिक्चर है जिसे आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप अपने प्रेजेंटेशंस में भी इस स्क्रीनशॉट को, इस पिक्चर को ज़रूर अटैच करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप डॉक्टर मायरन वेंस की जर्नी बता सकते हैं। कई बार पिक्चर्स जो है वो
1000 वर्ड से भी ज्यादा चीजें बोल जाती है। एक फोटो बहुत इजीली आप किसी को भी समझा सकते हैं। 90 यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे 1974 में जब डॉक्टर मायरन वेंस ने गल लैबोरेटरीज को फाउंड किया था, वहां पे वो रिएक्टिव फोकस में थे और वो एप्स्टीन बार वायरस टेस्ट किट को डेवलप करने पे उन्होंने डेवलप किया, जिसे आज वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। एंड देन उन्हें कैसे मार्केट के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में पता चला कि वो कितने पुअरली फॉर्मुलेटेड होते हैं और वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। एंड अगेन वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स अगर वो अपने लैब्स में अपने सेल्स को देते तो वो शायद बिजनेस से बाहर हो जाते। उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने 1992 में यूसानो को फाउंड किया, जिसके ऊपर वो प्रोएक्टिवली फोकस कर रहे थे, एक ऐसा सेलुलर न्यूट्रिशन जो कि सेल्स में जाके काम करेगा, जिससे पूरी बॉडी बेनिफिट होगी। सो ये बहुत अच्छा जर्नी पिक्चर है जो हम डॉक्टर मायरन लुइस का अपनी मीटिंग्स में अपने कस्टमर्स को, अपनी टीम्स को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और बहुत इजीली डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। Yes. And that's where this book comes in because, yes, a lot of products are poorly formulated. And this is proof of that because a lot of them score very poorly in this comparative guide. So these words might help you as you're talking to people, and the reason people stay on these products because they are superior. एब्सोल्युटली। This is a nice simple slide. Uh, that talks about the pharmaceutical grade, the quality of the USANA products, the highest safety and quality standards, far beyond industry requirements. I like the simplicity of this message. यस इंडीड। सो हमारे प्रोडक्ट्स फार्मास्यूटिकल ग्रेड क्वालिटी से आते हैं, ये बहुत अच्छा पिक्चर है जो कि ये शोकेस कर रहा है। सो ये डेफिनेटली आप आगे शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, अपनी टीम्स के साथ, जिनको आप बताना चाहते हैं यूसाना के बारे में, जिन्हें आप वो ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं यूसाना के बारे में। आप ये पिक्चर्स, ये जर्नी, इस स्टोरी को ज़रूर उनके साथ शेयर करें। Yes. So I am a health professional. So when I'm talking to health professionals, I need to talk about these global partnerships, and that's the wording that I use. So I partner with USANA Health Sciences, who's a global leader in cellular nutrition, and Sonovive Medical Institute, as you know. On this slide, actually, this slide I did, there's another slide I have that adds Sonovive Medical Institute, that because that was the next phase for Dr. Wentz. And Sonovive Medical Institute is the only functional medicine hospital that's certified by the Institute for Functional Medicine. So this is the wording, how you describe it. I really like these words. एब्सोल्युटली। सो कुछ वर्ड्स हैं डॉक्टर कैरन यूज करती हैं जब वो किसी को बताती हैं यूसाना के बारे में। सबसे पहले तो वो ये इस तरीके से शेयर करती हैं कि वो उन्होंने पार्टनर किया है एक हेल्थ कंपनी के साथ, ठीक है। सो वहां पे वो यूसाना के बारे में बताते हैं कि उन्होंने पार्टनर किया है, इस तरीके से वो प्रेजेंट करे इस चीज को। एंड देन वो सैनोवीव मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में बताती है। स्पेशली आप ये मेथड्स तब यूज कर सकते हैं जब आप किसी मेडिकल बैकग्राउंड के प्रोफेशनल के साथ बात करें। आप उन्हें बता सकते हैं दैट आपने पार्टनर किया है यूसाना हेल्थ साइंस के साथ, जो कि ग्लोबल लीडर है सेलुलर न्यूट्रिशन में। एंड उसके साथ साथ आप उन्हें सैनोवीव के बारे में बता सकते हैं, जो कि अगेन हमारा एक होलिस्टिक वेलनेस सेंटर है, हॉस्पिटल है, लाइसेंस्ड हॉस्पिटल है और होलिस्टिक वेलनेस सेंटर है। सो अपने आप में ये दोनों बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं हमारे लिए। एंड ये डेफिनेटली आपके ब्रांड की, आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है। Beautiful. Okay, so that was just one. That was my first retention step that we talked about, the 4 pillars of success. And I teach my team that from the very beginning. It's so important, and you just go over it many times. So the second one, of course, is people join, but then to stay, they have to feel part of a community. And I know you do that beautifully with all your lovely events in India. And I have this term, community equals immunity, which means immunity from many things, not just like disease immunity, but community immunity from that sense of isolation, immunity from a sense of not belonging. Community is the key. It's almost as important as the products itself. Without community, it's very hard to have retention.
एब्सोल्युटली। सो स्टेप नंबर 2 इज कम्युनिटी कनेक्शन। हमारे हमारे अपने ब्रांड पार्टनर्स के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। एक अपनापन का एहसास होना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, और जिसके कारण आपकी टीम आपके साथ रिटेन करेगी। जब उन्हें एक फैमिली जैसा फील होगा, एक फैमिली जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो वो आपके साथ स्टे करना चाहेंगे, वो आपके बिजनेस में बने रहेंगे। और एक कम्युनिटी जब आप बिल्ड करते हैं अपनी टीम के साथ, तो डेफिनेटली वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उन्हें मिलती है, और इससे उनकी इम्यूनिटी बनी रहेगी इस बिजनेस के अंदर। Yes. And the ways that you do this, creating a supportive culture, I like this sentence: people stay where they feel seen and supported. And again, I एब्सोल्युटली। know you do that beautifully in India. I know this is a high priority for you. Recognizing people for small wins, recognizing new brand partners, and part of keeping people is keeping it simple, because it can be complicated. But I don't even teach people a lot about how the business structure works when they first start. The first start, I want to get them connected. A simple onboarding experience, a welcome message from me, a personal welcome message. They'll get one from you, Sana, but from me. And plug into the team groups immediately. Whatever's available in terms of plugging them in, make it happen fast, and then introducing support tools. So these you've got to do it immediately. एब्सोल्युटली। सो कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपनी टीम को वो कम्युनिटी और सपोर्टिव कल्चर वाला एहसास दे सकते हैं। सबसे पहले तो एक सपोर्टिव कल्चर बिल्ड करना है हमें अपने साथ, हमारी टीम के लिए। हमें ये मेक श्योर करना है कि लोग हमारे साथ उन्हें ऐसा महसूस हो कि वो उनको देखा जा रहा है, उनको सपोर्टेड महसूस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम उन्हें देख रहे हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ रहना डेफिनेटली चाहेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ कि लोग वहां रहते हैं जहां उन्हें देखा जाता है और जहां उन्हें सपोर्ट किया जाता है, तो हमें ये अपनी टीम को फील कराना है। दूसरी चीज, हमें एक सिंपल ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस है जो हमारी टीम के लिए बनाना है। एंड अगेन, ये एक ऐसा ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस होगा जो आप एज अ लीडर बिल्ड करेंगे, लेकिन आपकी टीम भी उसे डुप्लीकेट करे जल्दी से जल्दी। सबसे पहली चीज, आप उन्हें एक वेलकम मैसेज भेज सकते हैं। जो भी ब्रांड पार्टनर आपके साथ ज्वाइन कर रहा है या जो कस्टमर आपके साथ आता है, आप उन्हें एक वेलकम मैसेज भेजिए, पर्सनलाइज्ड हो, उनके लिए हो, जो आप उन्हें पर्सनली शेयर करेंगे। दूसरा, आप उन्हें हमारे ग्रुप्स में, हमारा कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आपके कुछ पर्सनल ग्रुप्स होंगे, कम्युनिटी ग्रुप्स होंगे, टीम ग्रुप्स होंगे, तो आप उसमें उन्हें ज्वाइन कर दीजिए। एंड तीसरा, आप उन्हें सपोर्ट टूल्स प्रोवाइड करें। हमारे इवेंट्स हो गए, वो एक तरीके का सपोर्ट टूल होगा। और हमारा मीडिया सेंटर हब पे आप उन्हें मीडिया सेंटर से कुछ ऐसे पीडीएफ्स, कुछ वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स, ये सारी चीजें जब आप उन्हें शेयर करेंगे, तो उन्हें एक सपोर्ट फील होगा। और ये हमें बहुत जल्दी करना है। जैसे ही आपके साथ कोई बिजनेस में आता है, आपने इमीडिएटली उन्हें ये तीन चीजें शेयर करनी है। And this is the way I do it. My onboarding process is that immediate one-on-one session with a new brand partner to set goals and action plans immediately. And this is on Zoom because I have a lot of non-local people. They're all over the United States. And then I have a weekly meeting. Today's Monday, and today's my day that I'm going to have my weekly meeting. And I'll show you the outline of my meeting. And then recognition and encouragement all the time. Recognition, recognition, recognition. My original sponsor taught me that very early on, that recognize small wins all the time. And I do that every week in my meeting. कुछ और तरीके जिससे हम एक सपोर्टिव कल्चर बिल्ड कर सकते हैं, जो डॉक्टर कैरन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। नंबर 1 इज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। वो एक इमीडिएट वन ऑन वन सेशन करती है जब भी कोई ब्रांड पार्टनर उनके साथ ज्वाइन करता है। वो उनके साथ कुछ गोल सेट करती है और उन्हें एक्शन प्लान के बारे में बताती है, ताकि वो क्लूलेस ना हो और उन्हें पता हो कि उन्हें आगे क्या करना है। तो ये हम भी कर सकते हैं। आपके साथ जो भी ब्रांड पार्टनर ज्वाइन करता है, आप उनके साथ जूम पे आए, वन ऑन वन सेशन पे आए, और उन्हें उनके गोल सेट कराए और उन्हें एक एक्शन प्लान दे कि उन्हें नेक्स्ट क्या करना है।
दूसरा, वीकली टच पॉइंट्स, जैसे वीकली मीटिंग्स हो गई हमारी, रेगुलरली मीटिंग्स होती है जूम पे, आप उसके साथ लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी टीम की एक वीक में एक दिन, 2 दिन, जितना भी आपको सही लगे उतने दिन आप एक वीकली मीटिंग प्लान कर सकते हैं अपनी टीम के साथ, जहाँ पे आप अपने सारे ब्रांड पार्टनर्स को लेकर आए। एंड एट लास्ट, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन पे बहुत एम्फेसिस किया जा रहा है। जब आप किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उन्हें, उनके छोटे छोटे विंस को आप सेलिब्रेट करते हैं, वो आपके साथ और कनेक्ट होते चले जाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके वीकली एनरोलमेंट्स को सेलिब्रेट करें, उनके छोटे छोटे विन को, पहला रैंक हुआ, शेयरर हुआ, बिलीवर हुआ, कुछ भी हुआ, या पहला प्रोडक्ट अगर किसी ने आगे सेल आउट किया, तो आप ये छोटी छोटी विन्स हैं जिसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये उन्हें और एनकरेज करेगा और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। I think I have a picture. Yes. So when we get together, I make these little certificates. You'll see this top 10 income earners. And I have a top 10 preferred customer enrollers and little certificates. And they make a big difference we, when people show up and give recognition in front of each other. So this is at another convention, probably about 5 years ago. And we have our own little meeting and we recognize people. वंडरफुल। सो Yeah. ये पिक्चर डॉक्टर कैरन अपनी टीम के शेयर कर रही है, जहाँ पे उनकी मीटिंग हुई थी अपनी टीम के साथ, और उन्होंने एक छोटा सा सर्टिफिकेट डिजाइन किया और वो अपनी टीम के लिए लेकर आ गई थी, जिससे वो अपनी टीम को रिकॉग्नाइज करे थी। टॉप 10 इनकम अर्नर्स की पिक्चर आप देख रहे हैं कि ये उनकी टीम में टॉप 10 अर्नर्स थे, जो नंबर 1 to 10 पे थे। इसके अलावा एक और रिकॉग्निशन बताया उन्होंने कि वो अपने प्रेफर्ड कस्टमर्स, टॉप 10 प्रेफर्ड कस्टमर्स को जो एनरोल कर रहे हैं उनकी रिकॉग्निशन करती हैं वो। ऐसे अलग अलग रिकॉग्निशंस है जो अपनी टीम में करती हैं, जो कि डेफिनेटली इंकरेज करता है उन्हें और बेटर करने के लिए। या Yes. Okay, so step 3, purpose and path. So here we are developing, we've encouraged the products, we're giving recognition. So customers, preferred customers, become brand believers and then they become advocates. Suddenly they're like telling their friends. And then we have a chance to convert them over to being brand partners. This is the road, the way a lot of my people join because they try the products first. And you show them a simple, clear path. Like if someone loves the products, just share with 3. I have a share with 3 model. Share with 3 people how you're feeling, how your success, and suddenly they have potentially 3 preferred customers to start as a brand partner. A simple, simple path forward. एब्सोल्युटली। सो स्टेप नंबर 3 इज पर्पस प्लस पाथ, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो ब्रांड बिलीवर्स बनते हैं। जो उनके कस्टमर्स जो प्रोडक्ट्स को रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं, वो रिजल्ट्स देखते हैं, तो वो ब्रांड बिलीवर्स बन जाते हैं। फिर वो एडवोकेट बनते हैं, जहाँ पे वो लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं कि वो कुछ प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हें वो कैसा महसूस करा रहे हैं। एंड उसके बाद वो बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं। सो उनके साथ डॉक्टर कैरन क्या करते हैं, जो उनके कस्टमर्स होते हैं, जो ब्रांड पार्टनर्स बनते हैं, वो उन्हें एक बहुत क्लियर सिंपल पाथ दिखाती है कि आप शेयर विथ 3, मतलब आप 3 लोगों के साथ शेयर करो, आप प्रोडक्ट्स को, अपने एक्सपीरियंस को, बिजनेस को, बिजनेस मॉडल को, ये चीजें उनके साथ, 3 लोगों के साथ शेयर करो, और वो इसके ऊपर ही बहुत ज्यादा फोकस करती हैं। Yeah. Lovely. All right. I know we're going over a little bit, but I've shared these pictures before. This is an example of preferred customer conversion to brand partners where they had amazing success and everybody started saying, "Oh my gosh, what are you doing?" And suddenly they've got a business. And this is Brenda before and after. I have so many beautiful pictures. Also encouraging you to have people do before and after photos so that you have these amazing pictures. हम इस तरीके के कुछ बिफोर आफ्टर पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। हमारे साथ अगर कुछ कस्टमर्स हैं जो आगे हमारे ब्रांड पार्टनर्स बन सकते हैं पोटेंशियली, तो आप जब भी किसी को प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, आप उनकी बिफोर की पिक्चर ले लीजिए और फिर आफ्टर की पिक्चर लेके, जब वो डिफरेंशिएशन, आप एक टेस्टिमोनियल की तरह अपनी टीम में आगे लोगों को, अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकते हैं। या Yes. मूव फॉरवर्ड। So we are going to go over a little bit today because I know we started a little late. So the last part I have is the duplication part, which I want to refer you also back to the previous 2 webinars that I did, which talks about my duplication method. So the duplication formula has to be simple. It has to be something that you repeat and helps people see a clear success path.
Those three things. यस एब्सोल्युटली। सो डुप्लीकेशन के ऊपर जैसे हमने लास्ट एक दो वेबिनार्स डॉक्टर कैरन ने लिए हैं, वहाँ पे डॉक्टर कैरन ने ऑलरेडी डुप्लीकेशन के बारे में बताया है। सो आज उसका एक थोड़ा सा जिस्ट है जो डॉक्टर कैरन हमारे साथ शेयर कर रही है कि डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या हो सकता है। डुप्लीकेशन फार्मूला आपका वो हो सकता है जो सिंपल हो, बहुत सिंपल सिस्टम्स हो जो इजीली डुप्लीकेबल हो अगेन। दूसरी चीज रिपीटेबल एक्शंस, हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे एक्शंस हो जो रिपीटेबल हो, जब आप रिपीट कर रहे हैं वो एक्शंस डुप्लीकेट हो रहे हैं और वो आपको मेमोराइज हो जाएंगे, वो आपको याद होंगे। तीसरा क्लियर सक्सेस पाथ, जहाँ पे आप ऐसे एक्शंस, ऐसे प्लानिंग्स, ऐसा सिस्टम जिससे आपको आगे का रास्ता बहुत क्लियर दिखे, आपको पता हो कि आप कहाँ पहुंचने वाले हैं, आपके गोल्स मीट हो रहे हैं। जब ये तीन चीजें हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमारा एक बहुत अमेजिंग डुप्लीकेशन फॉर्मूला बिल्ड होता है। Right. And if you remember, um, the systems that duplicate, I'm going to show you. This is the duplication system we talked about on the last webinar, which is the 5-day cleanse groups. This is a simple way for new brand partners to get started immediately. They do it and they invite other people to join the group. So I refer you back to those recordings to see, because I went in great detail about how I run those cleanse groups. Yeah. यस एब्सोल्युटली। सो 5 डे क्लेंस ग्रुप्स के बारे में डॉक्टर कैनन ने लास्ट हमारे प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी इसके बारे में। सो उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है, जस्ट इन केस अगर आपने वो मीटिंग्स नहीं अटेंड करी है या आपको रिकॉल करना है उस पूरी ट्रेनिंग को, तो आप आफ्टरवर्ड्स मुझसे या पंकज से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको वो ट्रेनिंग्स लिंक फिर से शेयर कर देंगे, यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। या And this is what I went through exactly, the detail of how to promote, how to personalize it, how to prepare, how to participate, like the whole thing. I went into great detail for you. एब्सोल्युटली। So the fourth one that is a one slide to kind of bring this together is the habits that you as a brand partner would have to be a high performing leader. So the your energy sets the tone. So sometimes I don't feel maybe like I want to do a call because I don't know how many people are going to turn up. And guess what? I do it anyway. You elevate your energy, and how you show up is how other people show up. So you've got to set the tone for your team and clearly communicate, lots of transparency. I always lead with education, as you can see how I've delivered today, not sales, because I have defined sales as service, and creating a space for questions and learning and growth, and being results focused, not necessarily rank focused, is how I do it. Yeah. यस। सो नंबर फोर्थ पॉइंट, रिटेंशन हैबिट्स। हम कुछ हैबिट्स की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी आदतों की बात कर रहे हैं जो कि आपको हाई परफॉर्मिंग लीडर बना सकती है, जो हमें अपनी टीम में भी चाहिए, राइट? हमें हाई परफॉर्मिंग लीडर्स चाहिए और ये कुछ हैबिट्स हैं जो हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और वही चीज़ हमारी टीम भी इन फ्यूचर डेफिनेटली डुप्लीकेट करेगी। नंबर वन इज आपकी एनर्जी टोन सेट करती है, मतलब आप जैसे शो अप करेंगे आपकी टीम वही चीज देखेगी और वो भी वैसे ही शो अप करेगी। हो सकता है किसी दिन आपको मन नहीं हो काम करने का, या आपकी तबीयत अच्छी नहीं हो, या आप उतने मूड में नहीं हो काम करने के, या आप उतने एक्साइटेड नहीं हो, बट यू स्टिल हैव टू डू इट। आपको फिर भी शो अप करना है, आपको फिर भी काम करना है, आपको फिर भी वो मीटिंग लेनी है, क्योंकि आपकी टीम में जो आपको देख रही है वो आपको डुप्लीकेट करेगी, आपकी एनर्जी को डुप्लीकेट करेगी, राइट? दूसरा क्लियर कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी, हमें अपनी टीम के साथ, हमारे ब्रांड पार्टनर्स के साथ बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना है और ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपने सिस्टम के अंदर। थर्ड, हमें एजुकेशन के साथ लीड करना चाहिए। डॉक्टर कैरन बता रही है कि वो एजुकेशन के साथ लीड करती है। जो आपने आज ट्रेनिंग देखी, उन्होंने कितना अमेजिंगली हमें एजुकेट किया, तो वो एजुकेशन के साथ लीड कर सकते हैं। ये चीज़ हमें भी डेफिनेटली डुप्लीकेट करनी चाहिए। एंड फोर्थ, हमें एक सेफ स्पेस क्रिएट करना है हमारे ब्रांड पार्टनर्स के लिए, जहाँ पे वो क्वेश्चन कर सके, लर्न कर सके और ग्रोथ ले सके। एंड एट लास्ट, हम रिजल्ट फोकस्ड हो, रैंक फोकस नहीं सिर्फ,
ठीक है, हमें सिर्फ रैंक फोकस नहीं होना है, रिजल्ट फोकस्ड भी होना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे चेक्स बनने चाहिए, हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। जब आपके चेक्स बनेंगे, आपके रेगुलर कस्टमर्स डेवलप होंगे, रेगुलरली आपके साथ रिक्रूटमेंट होगी और परचेजिंग होगी, तो आपके रैंक्स नेचुरली अप होते चले जाएंगे। ठीक है, सो आपको रिजल्ट फोकस्ड होना है, जो डॉक्टर कैरन भी करती हैं, वो बता रही हैं। तो हमें रिजल्ट फोकस्ड होना है, ना कि सिर्फ रैंक फोकस्ड। या Lovely, lovely. So I told you that I'd tell you when I do my weekly Zoom meeting, which is I'm going to do today. This is how I lay it out. The first thing I do is recognition. The top, anybody that enrolled a preferred customer, any wins that anybody has had, I want to recognize them. Then I get people to share. I call wins and shares because it may not be an enrollment, but it might have been they did their first presentation and we want to celebrate them. So anything people want to share, and it gets them to connect with the group. And then I do any USANA updates. And this is the big one, inviting opportunities, because this is an inviting business. And you don't have a business unless you're inviting. So that is the layout of my agenda for each of my meetings. And hopefully that might be helpful for you to start a meeting yourself. एब्सोल्युटली। सो एट लास्ट डॉक्टर कैरन बता रही कि एक इनिशिएटिव जो अपनी टीम में वो करती हैं, दैट इज वीकली जूम मीटिंग, जिसमें वो रिकॉग्नाइज करती हैं जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं उनकी टीम में, छोटे छोटे विंस जो होते हैं उनकी टीम में, वो उन्हें रिकॉग्नाइज करती हैं। ठीक है, विंस और शेयर्स को जैसे बताया मैंने यहाँ पे कि वो रिकॉग्नाइज करती हैं, वो अपनी टीम को हाईलाइट करती हैं। एंड इनफैक्ट वो उन्हें बोलने का मौका देती है, कोई भी इंपॉर्टेंट बात या कोई अच्छा इंसिडेंट जो उनकी टीम में उनके साथ हुआ होता है, वो अपनी टीम को आगे बुलाती हैं और वो उन्हें शेयर करने की अपॉर्चुनिटी देती हैं। लास्टली कोई ये सारा अपडेट्स होते हैं तो वो आगे अपनी टीम के साथ सर्कुलेट करते हैं, एंड फिर वो उन्हें ट्रेनिंग देती है, वो उन्हें सिखाती है इनवाइटिंग अपॉर्चुनिटीज के ऊपर स्क्रिप्ट्स के साथ, कि वो कैसे इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। जैसे युसाना एक इनवाइटिंग बिजनेस है जहाँ पे आप लोगों को इनवाइट करते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगेन, जिसके बारे में डॉक्टर कैरन अपनी टीम को ट्रेन करती है, कोच करती है। तो यही सेम चीज हम भी अपनी टीम में आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। Lovely. And this is, if you want to use this, certainly you can. This is an old one I've been using for a long time. When I have an account, it's an accountability plan, but it's not, it's a simple one. So I'd ask a new brand partner to write down what worked this week, what they enjoyed, and what are two things I will improve in the next week. So it's not too intimidating, but it gets them to write down and to think about owning their own business. Yes, this is absolutely amazing, Dr. Karen. Please share this questionnaire and this weekly action plan with us after this call, or Okay. whenever you find time. Yes, it's very old, so you wouldn't have seen it before. I've been using it for so long. ओके, सो ये एक वीकली एक्शन प्लान है जो अपनी टीम में डॉक्टर कैरन सर्कुलेट करती है हर वीक के एंड में, जहाँ पे वो ये इस चीज़ के जहाँ पे वो उन्हें फोकस करती है रिव्यू करने के ऊपर, उनका जो पिछला हफ्ता गया। ठीक है, सो पिछले हफ्ते में उनके लिए क्या वर्क किया, क्या उन्होंने इंजॉय किया, और कोई ऐसी दो चीज़ें जो वो अगले हफ्ते इम्प्रूव करेंगे। तो इससे आपकी टीम को एक स्पेस मिलता है जहाँ पे वो सोच सके, रिव्यू कर सके अपने एक्शंस को, अपने एफर्ट्स को, और फिर वो क्या बेहतर कर सकते हैं अगले हफ्ते। सो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस को रिव्यू करने का तरीका हो गया, जिसमें आपके टीममेट, आपके ब्रांड पार्टनर खुद के साथ भी ऑनेस्ट है और वो आपको भी क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं। Okay, yes, I will share this with you for sure. And then finally, how are you going to measure retention? So this is your business, and with any business, you measure your business what we call metrics. So I've just picked three simple ones that you could start doing immediately. So one, new customer retention after 30 and 90 days. So we talked about all about the four pillars of success. So that's a metric, retention of customers, 30 to 90 days. The percentage of customers upgrading to brand partners, that's a big one for me because I have a lot of people start as preferred customers. And then engagement inside
your community group, because if people are engaging inside the group, they're feeling like they're belonging. And remember, community equals immunity, and it's immunity from them leaving too. Yes, correct. So Simple. These are as three simple metrics. Yeah. एब्सोल्युटली सो ये बहुत तीन सिंपल रिटेंशन मेट्रिक्स हैं जिसे हम ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, न्यू कस्टमर्स जो कि हमारे साथ रिटेन कर रहे हैं 30 to 90 डेज। सो 30 डेज से 90 डेज के बीच में जितने ज़्यादा कस्टमर्स आपके साथ रिटेन करेंगे वो आपके साथ डेफिनेटली लॉन्ग लास्ट करेंगे, वो आगे चलेंगे। ठीक है, ये आप ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे कितने कस्टमर्स हैं जो ब्रांड पार्टनर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं लेटर ऑन। सो अगर आपके कस्टमर्स प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, वो ब्रांड बिलीवर्स बनते हैं, फिर वो एडवोकेट बनते हैं, और फिर वो ब्रांड पार्टनर बनते हैं, राइट। सो ये परसेंटेज भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितने कस्टमर्स हैं जो इस इन तीन फेसेस में आपके साथ ब्रांड पार्टनर में कन्वर्ट होते हैं। एंड एट लास्ट इंगेजमेंट। सो आपके जो ब्रांड पार्टनर्स हैं या आपके जो कस्टमर्स हैं जो आपके साथ हैं, जो न्यू ब्रांड पार्टनर्स होंगे जो आपके ग्रुप में एडेड है, क्या वो ग्रुप में इंगेज कर रहे हैं? अगर वो ग्रुप में इंगेज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपकी कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, और आपकी कम्युनिटी इज इक्वल टू इम्यूनिटी। ठीक है, सो Yes, you got it. यस। सो ये तीन रिटेंशन के मेट्रिक्स हैं जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं हमारी टीम की ग्रोथ को, रिटेंशन को, मेजरली जिस टॉपिक के बारे में आज हमने इतने डिटेल में बात करी। Well, we sure have covered a lot of things today, a lot. And I'll leave you with this, which is build people and people build the business. Gotta focus एब्सोल्युटली, on, दिस इज yes, अमेजिंग। सो people, yes. ये एक फाइनल मैसेज जो आज डॉक्टर कैरन शेयर कर रही है, जो भी हमने इतना कुछ मीटिंग में डिस्कस किया वहां से ये क्रक्स हो गया। बेसिकली दिस इज द क्रक्स ऑफ द मीटिंग, दैट जब आप अपने लोगों को बिल्ड करते हैं, लोग आपके बिजनेस को बिल्ड करते हैं। Yes. And I know it's December and it's a special time of year. And it truly is my honor to work with India to support you. And I really enjoy doing this. And I love that you're so engaged in the chat. I see we have a question about some sample inviting scripts. So that might be another topic because of course, wow, that's a whole other a topic, inviting. So I love that you're still on. It's very late over there, and you're still engaged. That's what it takes to have a successful business, is to keep showing up. And with our time difference, I know it is very late over there, and I really honor everybody that has stayed on. We nearly have 100 people still on with us, so that's very impressive. And यस, from California to my beautiful country in India, I wish you all many blessings, yes, at this time of year for your family. And I look forward to continuing to work with you in 2026. thank you so much, Dr. Karen, for this amazing session. It's actually our honor to have you on board with us, and you showing up every month and conducting this amazingly training sessions for us here in India. Thanks a lot. And we wish you happy holidays, a very Thank you. Merry Christmas, and a very Happy New Year. So It is we'll a be looking beautiful forward to time meeting for you next us. I year. have four grandchildren, so every Wow. year it just gets better and better. Family is so important, and I know that's very true for India as well. And it's a blessing to be together. One day it'll be in person. Definitely, definitely. We would love to have you with us in India. Thank you Yes. so much. So we'll wind up this session now. Thanks a lot for coming in, and again, wish you a very happy holidays and a very Thank happy, you. amazing time with your family. Look at all the beautiful, I love these ones. I love all of the little emojis that we can do. Yes, yes. All Thank you right. so Thank much you for your again, Dr. beautiful Karen. translation. We do a beautiful team. Good Thank you teamwork. so much, Dr. Karen. Thanks a lot. All Wish you a right. very good day. Yeah. Bye bye, everyone. Bye Bye. bye.